we are learning chapter 1, reproduction in plants, and yesterday we have taken an introduction of this chapter. Now today we will learn about the reproduction by seeds. Now class, before knowing the reproduction by seeds, we have to know about what is germination. So germination, it is the process by which seed develop into new plant. वो प्रोसेस जिससे एक छोटा सा सीड या बीज एक नए प्लांट में डेवलप होता है या नया प्लांट एक सीड से बनता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम germination. Yes, now we start with the reproduction by seeds. Now, reproduction seed से कैसे होता है? But before that, we should know that how these seeds are formed. ये seeds बनते कैसे हैं? So most plants bear flower. अधिकतर जो plants होते हैं उनमें flowers होते हैं. But it is very important to note that every plant do not bear flower. हर plant में flower नहीं होते हैं. So when these flower blossoms, then they also had to go through the process of the drying of the flower. फ्लावर पहले खिलते हैं, उसके बाद कुछ समय में वो सूख भी जाते हैं. सो व्हेन दीज फ्लावर ड्राइज देयर पेटल्स फॉल. जब ये फ्लावर ड्राई हो जाते हैं तो इनकी जो लीव्स होती हैं, जो कलरफुल लीव्स होती हैं, वो फॉल हो जाती हैं, गिर जाती हैं. एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ फ्लावर डेवलप इनटू फ्रूट. और जो बाकी बचा पार्ट हुआ फ्लावर का, वो किस में डेवलप हो जाता है? फ्रूट में. नाउ व्हाट हैपेंस? दिस फ्रूट ग्रो इन साइज. कुछ टाइम में ये फ्रूट जो होता है, आपने प्लांट्स में भी देखा होगा, ये बड़े साइज का हो जाता है, इसका साइज बढ़ जाता है. इट स्वेल्स अप. सो व्हेन द फ्रूट ग्रोज इन साइज, यू वुड फाउंड द सीड्स इनसाइड देम. हमें फ्रूट्स के अंदर में सीड्स दिखाई देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यू कैन टेक एनी फ्रूट. Watermelon, when we cut, we found the seed in them. In papaya, when we cut, we found the seed in them. So whenever these fruit grow in size, we also found the seeds in them. And these are the seeds which give rise to the new plant by a process of germination. तो ये जो seed होते हैं, ये new plant को develop करते हैं germination की process से. So with this diagram, which is quite funny enough, but we can understand how the seeds are formed. So this is a plant that is bearing a flower. Now, when this flower dries, the petals falls and the remaining part then develops into a fruit. Now, when this fruit grow in size, so when it is edible to eat, so when we cut this fruit in two parts, so we can find a seed inside it. So this seed which is found inside the fruit, it may be one also, it may be many also. In different fruits, the amount of seeds are different. For example, in mango you find one seed, in watermelon you found many seeds, in papaya you found many seeds, in apple you find 4 or 5 seeds. So every fruit has a variation in the number of seeds in them. So this seed is formed. Now new plant will be developed from this seed. Now it also depends whether the conditions are favorable for the seed to develop into a new plant or new sapling or not. Now there are some important things that we should know about the seed. Each and every seed do not germinate. हर एक seed germinate नहीं होता है. Seed needs the favorable conditions for the procedure or for the process of the germination. Now you must have a question that why each and every seed germinate. So this question will be answered now. So now the reason that why each and every seed do not germinate is here. First, some seeds are not mature to grow into new plants. कुछ seeds इतने mature ही नहीं होते हैं कि वो एक नए plants को grow कर सकें. For example, this seed.
Now, next is the some seeds are destroyed by winds or rain. कुछ seeds जो होते हैं खराब हो जाते हैं winds और rain की वजह से. Some are eaten by birds. कुछ seeds जो होते हैं उनको birds खा लेती हैं या animals खा लेते हैं जिनकी वजह से वो खराब हो जाते हैं. For example, this seed, the seed eaten by birds or insects or animals. So, this is also not been used for the process of germination because the seed cannot germinate, and some do not get favorable conditions to grow. और कुछ सीड ऐसे होते हैं जिनको प्रॉपर क्लाइमेटिक कंडीशंस नहीं मिलती है जिससे वो प्रॉपरली जर्मिनेट कर सके. Hence, only those seeds germinate that get appropriate conditions to grow into plant. सिर्फ वही सीड जर्मिनेट कर पाते हैं जिनको अप्रोप्रिएट या प्रॉपर कंडीशंस मिलती है उनके ग्रोथ के लिए टू अ प्लांट. नाउ यू कैन सी दिस इज अ हेल्दी सीड. सो दिस काइंड ऑफ हेल्दी सीड्स आर एबल टू जर्मिनेट इनटू अ न्यू plants. So finally we can sum up and say there are only the healthy seeds which are able to germinate and to grow in a plant, but again these healthy seeds can only germinate in the proper or appropriate climatic conditions. If they will not get so, again this healthy seed also will not grow into a